everyone. Sat Shri Akal, Namaskar, Adab, and very, very warm welcome to the Friendship Day special with DesiGoonj. दोस्ती वो एहसास है जो अजनबी लोगों को भी करीब ला देती है। कहते हैं दिखावा इसमें ना जरा है, जज्बातों से भरा है। पल में समझ आया हाल दिल का कि रिश्ता दोस्ती का कितना गहरा है। जी हाँ दोस्तों, दोस्त तो बिना रिश्ते के ही रिश्ता निभा देते हैं और हमारा यानी आपका और देसी गूंज का जो रिश्ता है that's been going strong day by day and show by show। और उसके लिए मेरी तरफ से, आपकी इस दोस्त कमल सचदेवा की तरफ से और देसी गूंज की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। Thank you so much for your support always। As declared by the United Nations General Assembly, 30th July is the official International Friendship Day, although some countries do celebrate it on first Sunday of August. The International Day of Friendship was proclaimed with the idea that the friendship between countries, cultures, and individuals can inspire the peace efforts and build bridges between the communities and cultures and promote the international understanding and respect for diversity. And at an individual level, हम जब friendship day मनाते हैं, तो we can call our friends, we send gift cards, we do friendship bands, चाय के लिए जाते हैं बाहर, कॉफी पीने जाएं, खाना खाने जाएं, ट्रिप के लिए जाएं, and so on and so forth. So सबका दोस्ती मनाने का तरीका अलग है, of course. But the main point is to stay connected. If you haven't called your friend for a long time, please make that call. Get connected, stay connected, और एक दूसरे को बताएं कि yes, we are there for each other. And we at DesiGoonj are celebrating the Friendship Day with our friends, our viewers. We are trying to entertain you and bring different shows to you. Our show today is like truly international because we have the participants from different countries, from India, Pakistan, USA, Canada, UK, and UAE. Oh my God, this is amazing. Thank you to the team members today because the world is getting smaller, you know. We are making friends. The world is getting smaller. This is awesome. So the participants here, they will share their friendship stories and of course, entertain you with the songs and poems. And in my opinion, personal opinion, I think it's absolutely important that you like yourself before you like somebody else. I don't know if you agree with me, but मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम खुद को पसंद करते हैं, only then we can like somebody. So it's important to reflect and keep improving, keep learning. That's how it is. But before we talk more about Dosti and more about Friendship Day, we would like to pay tribute to our legend, our legendary singer, Padma Shri Mohammad Rafi Sahab, जिनकी आज death anniversary है. मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता बिकॉज उनकी आवाज़ में एक जो कशिश थी वो लोगों को अपनी ओर खींचती थी. He was always smiling, always helpful, हर दिल अजीज थे वो, हर के सबके प्यारे थे. सो मोहम्मद रफ़ी साहब की जो गायकी है उनको हम सलाम करते हैं और इसीलिए आज का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए इस एक भजन से. और उसके लिए आ रही है मीता खन्ना. ऑफ कोर्स एज यू नो, मीता इज द को फाउंडर ऑफ DesiGoonj और प्रोग्राम की शुरुआत जनरली इन्हीं से होती है. सो देयर वी गो. थैंक यू सो मच और अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और हेलो करते हुए. दोस्ती की अहमियत को तो हम सब जानते ही हैं. तो रफ़ी साहब की आवाज़ में मुझे अपना दोस्त समझ में आता है, हम सबको दोस्त समझ में आता है. ईश्वर के नाम से उनके गाए हुए एक भजन से शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ. तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा.
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। सब है तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। Thank you. That was beautiful and such a wonderful start of the show. Thank you, Meeta. Just everybody knows Meeta is traveling today, so थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, so bear with us. Thanks, Meeta. Sorry and मैं कुदरत के साथ दोस्ती करी हुई हूँ आज। क्या बात है, wonderful. शुक्रिया शुक्रिया। Thank you. So कुदरत के साथ दोस्ती, लोगों के साथ दोस्ती, किसी के साथ भी दोस्ती तो हो सकती है। और दोस्ती पर बॉलीवुड में तो बहुत सारी फिल्म्स हैं, बहुत सी फिल्म्स की कुछ खास बातें हैं, कुछ डायलॉग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपसे पूछूंगी। एंड द क्वेश्चन विल बी कौन सी मूवी से है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक ब्लॉकबस्टर मूवी से जिसमें दो दोस्तों का नाम था जय और वीरू, और आपको बताना है जय और वीरू की जोड़ी किस बॉलीवुड फिल्म में थी। ओके, सो जय और वीरू की जोड़ी का एक गाना हमारे लिए लेके आ रहे हैं रूट्स डीसी बैंड फ्रॉम डीएमवी। वेलकम टू द शो। नमस्ते। रूट्स डीसी बैंड जो है वो डीएमवी एरिया में लाइक मोस्ट फेमस है। दे आर बिजी एवरी वीकेंड, इनको लोग डिफरेंट पार्टीज में इनवाइट करते हैं। दे आर डूइंग फैबुलसली वेल। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वी हैव नीरज पारिके हियर, जीजू नायर एंड श्रवण। सो इससे पहले कि आप लोग गीत सुनाएं, here's a question for you. How did your friendship start and how did the Roots DC come up as a way of friendship? Can you share your friendship story, Yeah, please? so I always lean on my brother Jiju Nair for that response. Please go ahead. You always put me on the spot. Music, music, music. Yeah. You know that, right? After morning yourself, because we try to perform only live. We don't do karaoke or recorded ones, right? We always try to get in front of people. We love people, and that love has brought all of us together. Wonderful. Thank you. Wonderful. All right. Good. Thank you so much, and all the best for your future endeavors. Over to you. Thank you. Ji. So, real quick, so we are the Roots DC band. Thank you, Kanwalji, for that warm welcome. If you are in the DMV, which is DC, Maryland, Virginia, our whole band will be performing with other musicians and singers in Springfield, Virginia, at the Charty House. So, if you have some time this evening, please come. We have some fabulous singers and the whole band. So, thank you for your love and support. So this song, we chose this song because Jiju Bhai and I
I met this guy like 5 years ago by chance, and we developed this friendship. And wherever we go and whenever we meet, we just kind of just jam on this song. So we thought this was an appropriate song for Friendship Day. So here we go. लोगों को आते हैं दो नजर हमारे देखो दो नहीं वो जुदा एक खुदा ऐसा हो नहीं हमारा बिना साथ मरना जीना साथ है खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे और जस्ट यू नो आपकी ये दोस्ती हम भी कभी नहीं तोड़ेंगे. Thank you so much and good luck with your program today. Thank you for the opportunity. Namaste. Yeah, Bye-bye. Nice. And so किसी एक हास्य कवि ने क्या खूब कहा है. Remember it's हास्य कवि. दोस्त दो प्रकार के होते हैं. पहला होम्योपैथी जो मुसीबत के समय काम नहीं आते लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते. और दूसरे एलोपैथी जो छोटी मोटी मुसीबत में तो काम आते हैं लेकिन बड़ी मुसीबत में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते. खैर दिस वाज जस्ट एक जोक था. Jokes apart, at every stage of life, we definitely need friends. और उम्र के हर पड़ाव पर जीवन में दोस्तों का महत्व अलग अलग होता है. और दोस्त तो कहीं से भी हो सकते हैं, from all over the world, like we are having at DesiGoonj. Here comes another a dialogue from a Bollywood movie. और पहले वाली मूवी का मैंने कोई आंसर नहीं देखा. जय वीरू जो थे, that was from the movie शोले, of course, जिसका आपने सॉन्ग अभी सुना. और अब जो डायलॉग आ रहा है उसकी मूवी आपने बतानी है कौन सी फिल्म से है. रेडी? अगर कहीं कभी भी कोई दोस्त की जरूरत पड़े तो बस इतना याद रखना कि सरहद पार एक शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा. किस मूवी का ये डायलॉग है? प्लीज लेट मी नो. और चलिए अब ऐसा करते हैं, सरहद पार ही चलते हैं और बुला रहे हैं एक
बहुत ही उम्दा शायर, eminent poet from Pakistan, नदीम अफजल साहब। नदीम साहब, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। जी सॉरी जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ਤੁਹਾਡਾ बहुत ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸੀ ਗੂੰਜ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਗੂੰਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਵੀ ਆਰ ਆਨਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। जी बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਸੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਦੇਸੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਦੋਸਤੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਜੀ, ਸॉरी ਚਾਰ ਨਜ਼ਮ, ਸ਼ਾर्ट जी नज़म, उसका नाम है यार जी। उसका नाम ही यार है कि सब सुन के भी चुप रहिंदा है, सब सुन के भी चुप रहिंदा है, ओदी गल खुदावां वर्गी है, सब सुन के भी चुप रहिंदा है, ओदी गल खुदावां वर्गी है, जे मंदा भी कदे बोलदा है, तासीर दुआवां वर्गी है, तासीर दुआवां वर्गी है। ਇਹਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਅਹਿਬਾਬ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਐ ਸਤਵਾਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐ ਸਤਵਾਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਮੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਐ ਸਤਵਾਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਮੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਔਰ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾ ਸਜਣਾ ਤਾਈਂ, ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾ ਸਜਣਾ ਤਾਈਂ, ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਾ ਫੱਬੇ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਜ਼ਲ ਚੋਂ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਹੀ ਯਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਹੀ ਯਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਹੀ ਯਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੂੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੂੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਹੀ ਯਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕਿ ਚਲਦੀ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਿ ਚਲਦੇ ਐਸੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਚਲਦੇ ਐਸੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਕਰਦੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਚਲਦੇ ਐਸੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਕਰਦੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਕਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਕਾ, ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਬਸ ਨਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਕਾ, ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਬਸ ਨਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਗਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਟਦੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਔਰ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਦੀਪਕ ਦੇ ਸੁਰਤਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ। ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਦੀਪਕ ਦੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਵੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ। ਚੱਲਦੇ ਐਸੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਕਰਦੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਕਰਦੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ। ਔਰ बहुत शुक्रिया जी। बहुत अहबाब ही ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਛੱਡਣ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। जी थैंक यू। So coming back to the dialogue I shared earlier कि सरहद के इस पार एक शख्स है जो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है. That was movie Veer Zara, and Gauri, thank you so much for telling the answer. Veer Zara was the movie. So when we talk about friendship, so सबसे पहले जहन में जो TV show आता है, that is Friends. That ran a number of seasons. So here's a question for you. The TV show Friends, which year did it air the first? सबसे पहले किस साल में जो TV show है Friends that was aired? So let us know the answer to that question. And अब जो आपके सामने हम Friends लेके आ रहे हैं, they have been friends for a long time. हम कुछ seasons की बात कर रहे हैं, the Friends show, but these two have been friends for a long time, and we really wish that their friendship is forever. Inviting Divya Gupta from USA and Himanshu Malik, which I don't see him, something is wrong, probably he'll join quickly, from Bollywood. Himanshu ji coming, I think. There he is. Okay, so welcome to the show, Divya and Himanshu. Hey guys, hi, how's it going? Thank you for having us. Yeah. Before Thanks you for having talk us. about anything, let me introduce you to our viewers. Divya is from Washington, D.C. She's a mother, musician. She's a former competitive athlete, okay? An avid snowboarder, adventure sports specialist, enthusiast, and the CEO of award-winning brand marketing company Grids Consulting. Oh, wow. और हिमांशु मलिक को भी आप लोग जानते होंगे. हिमांशु has been a model. He has acted in many Bollywood films. One of the notable films which I like is Tum Bin, and he is now also a screenwriter and a director. और अभी उनकी movie आई है चित्रकूट, which is very different from the regular masala Bollywood films, just so you know. Thank you so much. Yes. Okay. So Divya and Himanshu, so great to have you on the show. Thank you so much. So आप बताएं, now you are in US, Divya. Himanshu आप Bollywood में हो. So first of all, कहाँ से दोस्ती शुरू हुई, और the long distance friendship भी आपकी बहुत strong है. How is it going? Let's start with you, Divya. Okay, I think our friendship, हमारी दोस्ती, हमारे dad से शुरू हुई. So I think I want to say कि हमारी दोस्ती, if you really calculate, over 60 years की है. Because, right, Himanshu? Because our fathers were roommates at age 18 in the Indian Air Force. तो वहाँ से हमारा family का relationship शुरू हुआ. और जब शुरू हुआ तो I think मैं 8 साल की थी के करीब, I think, when I first met you, Himanshu. Yes. It was one of those energetic instant bonds कि immediately मैंने बोला राखी कब है, मैं आ रही हूँ बांधने. And it's been just on and on, since then, because we acknowledge and recognize how energetic and different our bond is, and our friendship goes beyond just anything. And I'm so grateful to have him in my life. Yeah. Perfect. Yes. Lovely. No, I think we've been always since day one. Since she was a little girl, I think I had that big brother thing with her, and I got you, girl. I got your back. I'll take care of you. Don't worry. And I remember, so I think when kids meet, they
they come into groups or pairs. So Divya and me were a pair, and my sister Ah. and Divya's brother were a pair. Yeah. We were like, oh, you're my buddy and you're my buddy. So I think Uh-huh. that buddy system started then itself, and yeah, and recently, she sent me I don't know if you even remember, a couple of years back, she sent me a picture that her dad had of my dad, Oh. which it is a really nice, rare picture of my dad in his, in his young days in his uniform. Ji, ji, ji. So yeah, and then Divya moved on to they moved on to the US. We stayed in touch, and she went on her journey as as a musician, and the multiple things that she's done, and Oh the yeah, fantastic thing multiple that she's things. It's and, hard to keep and track of. yeah, Yeah. and I used to and I was doing my own thing in India, and I was getting into pursuing my own art. She would call me middle of the night sometime and say, "Bhai, listen to this song I've made," Oh my and God, I forgot about that. yeah, and guess what I'm doing? I'm in snowboarding, and and I met this guy, and what do you think? Hey, And वो वाली बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. Actually, so yes, so I think we had a very natural bond, and I think Yeah. she kind of sensed that I get her, and I think she got me, and I place a lot of importance of sisters in my life, because mm-hmm. I think sisters can say to brothers that girlfriends' wives cannot, and mothers don't, or like sister can really tell her brother things, and like because she just wants the best for the brother, right? Right. She just and she's got no personal kind of agenda with the brother, Agenda. except like you do it right in your life, Right. be Right. good, be right, don't screw it up, don't be a mess, be careful of this, so I think Divya has been that for me, and I absolutely love her for that, and yeah, it's one of those beautiful, rare connections, and I'm really happy to have her. I really am. Oh, Thank you so Divya. much, Himanshu. But I think, the best part about us is no judgment zone. I think that is so true because, like for us, our relationship, I know I can call Himanshu no matter what time of the day and say anything and not Mm-hmm. get judged for it. Let it be the craziest story in my life or the simplest of the life. And same for him, because, we're there for each other without judgment, because that's such an important thing in human beings. We judge each other, judge ourselves so much. So I have to say that it's like a no judgment zone in our relationship. Yeah, I think lots of times it happens that sometimes I would have, like I would have an evil day, and I would call her and say, you know what, this is what I did. I'm a bad guy. Bad She's like, thing. no, yeah. She's like, no, it's cool, it's okay. These things happen, I'm like, it's life. You're a human being. Yeah, Move yeah. on. It's okay to make mistakes, right? Yeah, I don't judge. Yeah, it's okay. So Divya has a wonderful energy to her, and I wish her Oh the yeah. best, and uh, and she's the kind who just call me middle of a. We haven't spoken for like 4 or 5 months. And she call and say, "Come on, let's do something. Let's do some work. Let's make some money. Come on, what's happening, bro? Like, come on, don't sit around. And this is what I'm thinking. And I'm on it. I'm on the ball. Are you on the ball?" And I'll be like, "Okay, got it, Divya. I got it. I'll speak to you soon. I'll get on the ball." So Exactly. and she's for me, she's a path because she knows I'm a bit lazy. I didn't think say she, it. I think she believes in my talent and everything, but she knows I'm a bit, I get very like bogged down, and she's like, no laziness. You cannot That's be right. lazy. Get your You ass sound like a out drill there sergeant. and do it. You are lucky, Himanshu. You are lucky to have Divya in your life. You can keep you on the track. Like, okay, abhi time nahi hai sustane ka. Let's get it on. Yes. And I No, think I'm Divya very is happy. lucky too Oh my to God, I'm share so whatever you want to with Himanshu.
Absolutely. I mean, honestly, he's my brotherly figure. My brother, literally, he is there. And the thing is, the distance just doesn't matter in our Right. life. Distance just doesn't matter. Thank God for technology, because Oh, I yeah. always tell people, like, we've maintained a friendship of almost over 30 years. And that was no smartphone, no technology, no Zooms, no, none of this. Right. Right. And Right. so we can survive a relationship, because it's like relationships are so important to both Himanshu and me. I think we stay on top of them and keep them and sustain them, and the good ones, there's so everything is work, hard work. And I want Absolutely. to share that it doesn't matter what interpersonal relationship you have, everything requires attention and hard work, for it to be good, for it to be Yeah, good. true. Yeah. And with your profession and Himanshu's profession, and you guys being so busy, still you find time for each other. That's what I think true bonding is. Yeah. That's Yes, it's wonderful. amazing. तो Yeah. जो डिफेंस फोर्सेस में थे आप दोनों के dads, did it Yes. help you in bonding? Because I know I am army officer's wife and my husband retired after 20 years. So even Okay. for me, and then my children later on, it was a very different world, because every 2-3 years you're meeting new people and all that, and नए रिश्ते बनते हैं, नए friendships बनती हैं. So you are like really kind of open-minded हो जाते हो. You learn so much. Does it Yes. help Yes. you guys too? Now, I think what has happened is that our parents were good friends. Right. And I think we met at that age where when we saw parents so comfortable and so so happy and to hanging Right. out and so comfortable, it gave us that comfort. I think they literally we inherited that comfort that they had of communication, of friendship, of no judgment. We Hmm. just picked it up like that. Nice. At one time I was very close to her brother also, and Mhm. he's also a great guy, and Yes. I hope he's well. And so yeah, I think that comfort levels, and it's that very critical age of between she was between 8 and 11 or 12 when she was in India, and when I was 12, 16. When you're Right. discovering a lot of things, and you're and you have a lot of new things happening, and you want someone to discuss it with you, and and I remember I discussed my first girlfriend with her, and I have a good story for that one. they snooped on the phone call, and and Oh yeah, I was and always trying to tune in. Back in those days, we had those and one of Divya a had some kind thoughts cellular about. devices, Uh, handheld. So those are. I think what happens is that between in some friendships they get woven with time, and that's it. They're it's woven into time of your life, of your memories, of your moments, and nothing can ever take that. Nothing can ever change that. True. And God bless for memories. Absolutely. And Beautiful. I think for us also, Himanshu, I think what you said about seeing the togetherness in our parents, that was so great. And also, our personalities are so alike that we were just able to, and our likes and stuff. Because I remember when I first got into modeling, you're the first person I could tell to, because you had that background. Yes. Or adventure sports, because you were all into adventure sports as well. So it was really easy to relate and connect, because we had so many similarities in our interest and personality that just added the Yes. icing Yes. on the cake. Yes. Yes. I think you're an adventurous spirit, and that's Mhm. what we both are adventurous spirits, Exactly. and always trying to do something risky and crazy and new. And And living for the moment. Life is too short, yes, yes. you know. I, Yeah. I remember when you moved to LA and things were tough, and you'd call me. I'm like, what? You moved to LA on your own? I was like, I mean, it's pretty It's ballsy, Divya. It's if I can use Divya. that word. Sorry, it's like Yeah. pretty cool, but hey, like hang in there, huh? Watch out, huh? And you're like, I'm doing this, I'm like, oh my God, my poor dear baby sister in LA, and she's alone, and she's like, no, this is great fun. I'm living by the sea, and I got friends coming over. I'm like, okay, just be easy, and I, I I mean, I think it's admirable. I think it's the same time when I moved to Bombay.
So you may Yeah. have that, both coming out in the big bad world. Yeah. But I always love taking leap of faith. Life is too short not to. And when I think about what's happened with the lockdowns and the COVIDs and how travel got banned, you can't just leave your home. That made me appreciate my lifestyle because of at least I've lived a very full life. I've experienced life, and a lot of that can't be done anymore, even if you wanted to. Just can't do it. Life is Yes. so different now. So, for me, it was all about that. It was about just experiencing and exploring. And I knew there was going to be a time in life where just has to shut down. That can't happen anymore. So I wanted to make sure I took advantage of every opportunity, Yes. and lived it. Yes. 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 Wow. There's I mean, Kaval. I can listen to you for a long time, but we know that we are short on time. Yes. So I want to, just make a point to everybody. Just, Divya is so inspirational with her all kinds of activities and her free spirit and, taking those bold moves and risks, which is amazing. And so is Himanshu, from Defense Forces kid to all by himself in Bollywood. Making a place for himself in Bollywood is no easy feat. We know that it's not easy. And kudos to you, Himanshu, for standing your Thank you. ground Thank and you. doing so well. So I'm Thank sure you. you Thank have you. more projects coming up you're looking forward to. But in the Yes. meantime, right now, for our show, Divya and Himanshu, who is doing what? Singing, poem, kya aane wala hai? Something more than the beautiful bond, because we can listen to you, there's no doubt. लेकिन Ah, हमें थोड़ा She's the सा gifted one. She's the gifted one. देखो, gifted in some way, you're gifted in other ways. So whatever gifts you have, please present. okay. Um, I'll sing. I had two songs in mind. One I will sing, but the other I really want to sing. So I'll start with um, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती हो कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती जिंदगी का नाम दोस्ती दोस्ती का नाम जिंदगी. All right, that's it. Lovely. Thank you. Thank And so you. true. दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम. Listening to you guys, पक्का ये विश्वास है. वैसे तो था ही, लेकिन अभी दृढ़ विश्वास हो गया. Yes. Yes. It Yes. is beautiful, Thank you. and you Thank sing you. beautifully Thank well. you. Thank What's you. the Yes, she does. other She does. song coming? I know you're singing something else, Divya. Oh, you want me to? Oh, Sure. मैं गाना चाहती थी. मुझे पसंद जो है वो है हाँ. यार बिना चैन कहाँ रे प्यार बिना चैन कहाँ रे सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले. I love this song. It's And lovely. beautiful It's message. lovely. Thank you. Beautiful message. So Thank you. Himanshu, before we say bye to you, what do you think is few things most important in friendship to sustain over time? I think no judgment and no expectations. Which is hard. Yeah, I mean, but that's how bonds build. Otherwise, the thing is, in today's world, things people move so quickly. Everything is moving so quickly. You make friends, and then you connect, and people move on. Yes. You have you're working with somebody for a couple of years, or you're involved with living in a certain area for a couple of years, and then you just move on. Yes. So what is it that brings us back to people? Mm-hmm. It's that, I think it's that unsaid deep understanding of each other, and that comfort that I won't be judged, I will be loved, Beautifully said. cared, Yeah. and Divya. Oops. Oh no, we lost him. We did lose him. Do you want to add something to what Himanshu was saying?
Yeah, the question is one more time. Tell me one more time. It's just like, what are few things we need to remember for our friendship to be sustainable over years? I have to say, I wanted to acknowledge two more friends because I think you know my story. I was homeless for a couple of months when I started my company, and there were a few people when it comes to friendships that really were there. And two names that come to my mind are Cynthia and Kipper. And if they're watching this, they'll know about this because I, they literally financially speaking, about $25,000 or something. They tried to rescue me with it, right? They're nobody, they're friends. They're not supposed to, but they did it. And I want to acknowledge that here because it's Friendship Day. On that note, I wanted to say that it has to be that you have to be there for each other. Right. And it doesn't have to be financially stability or emotional anything. Just show up. Right. And I say that for a lot of people at all times, because a lot of times when we want to just be there for someone, just have to show up in whatever capacity you can. Let it be a listening ear, and when you're listening, listen. Don't say a word. Because in my life, when I'm calling my friends, first of all, I don't have the time to even chit chat, but if I call, I just want you to listen because most of the time we have good head on our shoulders and we have to trust our own decision making, but we need to be there for each other. And I think especially since the lockdowns have happened and mental health and wellness has become Yeah. such a challenge, Mm-hmm. all age groups, all demographics, that you really have to be there for each other and just show up. So I think for sustaining friendships, that's the most important thing for me is just being there for my friend and just showing up for it. Perfect. Perfect. Thank you so much, Divya. It was great having you and Himanshu on the show. And we wish you forever friendship. And, we hope that people who are listening to us are also noting down these things you know, we have like a lot of people are friends forever with so many other people. So, yes, we do need to acknowledge and say thank you to the friends. Thank you. Oh, thank you so much, Kendall, for having me and Himanshu. Yeah. Thank you, Divya. Bye bye. Wow. Beautiful story and beautiful points they've made. And I just, जो पहले मैंने question पूछा था, I don't know if there's an answer. I don't think there's an answer. The question was the TV show Friends. When did it first air? And it first aired in 1994 and it had 10 seasons, 1994 to 2004. और अभी, yes, thank you, Sanam, 1994. अभी मैंने थैंक यू बोला एंड वी ऑलवेज से थैंक यू एंड सॉरी पर एक मूवी का डायलॉग है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू ओके ओके सो टेल मी व्हाट मूवी एम आई टॉकिंग अबाउट दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू सो लेट्स हियर फ्रॉम यू व्हाट मूवी एम आई टॉकिंग अबाउट and as Divya and Himanshu were talking, that when we are growing up, throughout our lives, the friendships evolve, their meanings evolve, and with each new friend, we kind of expand our view of the world. Our perspectives change, our outlook change, and their experiences contribute a lot to our lives. With our friends, we grow and broaden our horizon, and the world gets smaller and get more connected. So as I said earlier, we at DesiGoonj are trying to learn from our new friends and trying to stay connected. So next, bringing our new friend from UK, Dinesh Gogna. Hi, Dinesh. Camera. So Dinesh is joining us from UK, first time in DesiGoonj. We cannot see you. Let me do it again. Okay, we cannot see you, Dinesh. Okay, let's check again. Nope. All right, people. Can you hear me? नहीं आ रहा अभी, so I'm here. I think we'll go to him in just a couple of minutes. In the meantime, I want to share एक हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता है दोस्ती पर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करती हूँ। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं,
मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए हैं, तू से तुम और आप हो गए हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के ए दोस्त, जी लो इन पलों को हंस के ए दोस्त, फिर लौट के दोस्ती के ज़माने नहीं आते। So as I said, let's always try to stay connected. And let's see if Dinesh Gogna's camera is working. I don't see that. I'm here. I'm here, and I can see myself. Can you guys on, see Dinesh? and I can see myself I think we'll and go as well ahead. as you. Nope. Cannot. Wait, hold on. We can see and hear. Okay. And apparently I'm in the show. It is telling me I'm in the show. Dinesh, can you unmute? Oh, wait, no. Dinesh, no, I cannot see him. You can see him and hear him as well. Okay. Dinesh जी, आप गाना गा रहे हैं तो आप गाएं. Sorry. नहीं ठीक है मैं I can also hear myself on and see myself on the screen, your main screen. So yes, and it's a pleasure to be invited onto the show, but I'm actually was hoping that there wouldn't be any hitch, but no worries, I will carry on. And I think just a few words about friendship. Friendship is very important, and I listened to what I think Nadeem Saab said and what Divya said and Himanshu said. I absolutely agree with it. Friendship is a lot of things. It's very important factor in your life to actually go through life with friends. And that's the only way I know. Otherwise, I can't even imagine how without friends I would have lived my life. And some of my friends are still my friends after more than 40 years. One of my oldest friends that I regularly spend time with is a friend from 46 years ago. So that's how long my friendship goes. But there are a couple of things I would just want to say. Friendship is a lot of things, but friendship is definitely not somebody who a friend isn't somebody who actually acts as your friend and behind your back actually puts you down. On a funny note, friends also don't post embarrassing pictures and videos of you on Facebook. That's just on a light note. But it's very important to me, friendship. So I'm going to do 2 short songs, and my first song is on friendship. And it's one of my the favorite song that I have of friendship. There are many others, Dosti soundtrack, Ye Dosti, and Tere Jaise Yaar Kahan. But this one is my particular favorite, and it's actually loved by many people. So hopefully we won't have any issues with the sound or anything. Please let me know if you hear the soundtrack. Can you hear this? दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी
मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। The sound okay? Thank you, Mita ji. जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हा हा हा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। The great R.D. Burman साहब, किशोर कुमार जी। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज ना करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज ना करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, रूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। Thank you, and I'm quickly going to move on to the second part song that I'm going to do, which is my tribute to Rafi Saab. And, all right, thank you, Dinesh ji. I think for some reason, okay, I cannot hear you, but thank you so much. And with the comments, I think the wonderful comments आपके लिए तो शुक्रिया आपका for joining DesiGoonj. Thank you so much. Okay. Okay, so from UK, guys, let's go to Dubai. And from Dubai, we are bringing you a father-daughter jodi. Okay? And we are very excited. And again, for some reason, I cannot see them. I think you all can see and hear them. Hello, hi. Okay. कुछ गड़बड़ है मेरे यहाँ. So, Cass Punjabi and Sara Punjabi from Dubai. Cass is a singer, music composer, and arranger, and event organizer. And he has a wonderful Facebook group called Fun Cars, जहाँ वो नए talent को support करते हैं, promote करते हैं. Wonderful job you're doing, Cass. And he is the 4th generation talented singer in his family. And now Sara will be next. So welcome to the show, Sara and Cass. So just talk about कि आप दोनों की father-daughter relationship and why and how is it a friendship, और उसके बाद जो भी आप गीत सुना रहे हैं. Over to you. So, hi guys, my name is K.S. Punjabi. I'm from Dubai. I'm a singer, and here she is, my daughter Sara. Hi guys. So, for me, I mean, the day when Sara was born, from that day, I hold a very special bond with her. So, she's my second daughter. She's my younger daughter, and friendship जरूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच में हो, जैसे strangers या neighbors. This is something like एक mother और एक daughter, एक father और एक daughter, एक father एक son. They can be friends,
And with Sarah, I have the same bond. So I am less father and more friend with Sarah. So I don't know how Sarah feel about it, but I'm sure that I'm his best friend. Yeah, we have a great bonding, and he's my best friend. He's my inspiration, and I always look up to him for guidance. Yeah. So today we gonna sing a song on friendship, and this song is very different actually, and it's a very unique song. The song जब आप सुनोगे तो उसे बहुत आपको लगेगा कि it's a very easy song, but to match there are two singers. So one is Amitabh Bachchan and another is Farhan Akhtar. So Amitabh Bachchan has a very bass voice, and Farhan Akhtar, he has sung that song on a high pitch. So we both are gonna try that song, me and Sarah. So I hope guys आप लोगों को ये पसंद आए. So let's hear it for friendship on Friendship Day. यारी तेरी यारी चल माना इस बारी सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आगे हारी यारी तेरी यारी चल माना इस बारी सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आगे हारी खूब है लगी मुझको तेरी बीमारी इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा अपनी तो यारी अतरंगी है रे कर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त मलंगी यारा अपनी तो यारी अतरंगी है रे अतरंगी रे ऊ, yeah. बिन कहे तेरा तू हर मोड़ पर ओ यारा मेरे लिए भूला तो खुद की डगर ओ यारा मेरे लिए हर कदम समझ ली तेरी यारी इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा अपनी तो यारी अतरंगी है रे कर बेरंगी मस्त मलंगी यारा अपनी तो यारी अतरंगी है रे अतरंगी रे यारी तेरी यारी चल माना इस बारी सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आगे हारी खूब है लगी मुझको तेरी बीमारी यारी तेरी यारी चल माना इस बारी
I think Mitaji, your mic is muted. Mitaji's mic is muted. It's on mute. Yeah, thank you so much. Thank you, Cass and Sarah. And it's always so awesome when your family is your best friend, no? So Yeah, definitely. I can understand your feelings, your sentiments. Thank you so much for being here. Okay. Thank you, Cass. Thank you, Thank you, guys. Sarah. Thank you so much. Love you guys. Keep And rocking. Abhi, yeah, thank you, Ji. And अभी आपने फादर डॉटर की जोड़ी को सुना और देखा, and why not a mother daughter जोड़ी? So let's welcome Sanam and Shuli ji from UK. Hi, everybody. Hi. Can you hear us clearly? Yeah, we can hear you. I can see Okay. you. We can't hear ourselves now whilst we're singing because we've switched the volume off. So we're just going to do our song. Before, I know Kawalji would like to ask a question. Let me tell you that as we're doing a show about Friendship Day, I think the best friend ever that you can get is either your mother or your father. And for me, it is definitely my mom, because as her child, there's only two of us, myself and my brother, who is 6 years younger than me. And you know what? As a daughter, I'd like to say, Mom, you know what? No matter what we've been through in life, you know, when you feel like you're almost hitting rock bottom, and then that beautiful hand comes in between, and it is my mom and my dad. Both of you, I love you so much. Thank you. And thank you for never letting me fall. That's all I can say. That is so sweet. And Shuli ji, that is amazing. You know, your relationship with Sanam. And I just want to tell the viewers that they have a band called London Awaz since 1993, right? Yes. You were singing in different countries and doing really well. Yay! Thank you. Yeah, sure. Okay, so Kamalji, before I start singing, I would like to say hats off to you for organizing such a beautiful program and making us a part of it. Thank you so, so much. We really appreciate it. And this is our dedication to this amazing show. Kachra Muhabbat Wala. Yeah, boy, let's go. Ready, Mom? Yep. Right. Put that one down and put Let's see what put your hands together. Music में हाथ लगा है. Enjoy. Yes, come कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा जाना कचरे ने गिरी मेरी जान आए दिन तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे मेरी जान आए मैं तेरे कुर्बान कचरा मोहब्बत वाला अखियों में सजाना कचरे ने गिरी मेरी जान आज दिन तेरे कुर्बान ये बात आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार देखे कड़की जवानी की ये
बची पहाड़ देखे चढ़ती जवानी की है बची पहाड़ देखे दिल्ली शहर का तारा आज देखे दिल्ली शहर का तारा मेरा मकान देखे झुमका है बेटी वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने दिली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कट जाऊं मोहब्बत वाला लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय मैं तेरे कुर्बान I love you, Mom. My PFS. The best dosti ever. मोटर ना मंगना मांगू झुमका ना हार मांगू मंगना मांगू झुमका ना हार मांगू जिसको जगाने पाने दिल का करार मांगू सैया पे दर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू सैया पे दर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगो किस्मत बना दे मेरी दुनिया बसा दे मेरी कर लो सगाई मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा जला कचरे ने तेरी मेरी जान हाय तेरी कुर्बान अतुल जोशी जी ये बात देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे लाने को भी आएंगे काम तेरे आएंगे जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे खुदा ये जाती वाला उन पर मोतियन का माला उड़ती ने दी मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कचरा मोहब्बत वाला लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कचरे ने तेरी मेरी जान हाय मैं तेरी कुर्बान हाय मैं तेरी कुर्बान हाय मैं तेरी कुर्बान Whoa, 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 whoa. What was that? Amazing. I mean, your energy is so amazing. And I can see when you go on stage actually how you rock everything and how you interact with audience. Oh my God, I loved it. Thank you so much. And as I said before, you know what, my mom, she is absolutely, this show is about Friendship Day, and I can't give you a more better friend and a best friend than my mother. I love it. And I love you. Kawalji, I am going to be backstage. I'm just going to go and feed the kids, but we are still backstage, okay? Thank you so much, Sanam. Thank you so much, Shuli ji. And keep rocking. Love you. Bye. Oh, wow. This was so amazing. The energy was fabulous. So I believe on an average, an adult has 2 to 4 best friends,
And about 57% of the teens make friends online. अरे teens की क्या बात करें, हम क्या किसी से कम हैं? Just see how many friends we have made online. And, in the past 1.5 years, we have done so many virtual shows and we have made connections with so many new, wonderful, talented artists that we really are blessed. We feel blessed. And I definitely think that virtual shows are here to stay. And now we are inviting our, again, online friends, Atul Joshi and Anand Kulkarni from Toronto, Canada. Yay! Welcome to the show, guys. And Atul and Anand have a wonderful music group called A2T, which they will talk about. And also, I'm hoping थोड़ा सा आप अपनी friendship के बारे में बताएं, अपने musical journey के बारे में बताएं, and फिर the stage will be all yours. Thank you so much. So hello, DesiGoonj. This is my first time here. Happy Friendship Day to all the viewers. We love this show. It's been really fantastic and really amazing performers before us. So it's been a good start, and we want to keep up that same spirit. Thank you, Kavalji and Meetaji, for having us here. About our friendship, you're absolutely right. The online friendships sometimes start without warning of what's coming ahead. And Anand and I literally started with a Facebook friend request that Anand sent to me because of something I posted in a Facebook group about a rock band. Okay. And he found that strange that in this group, which is predominantly Marathi-speaking people, and this guy is posting something about a rock group, so he must be a rocker. And that's how we started off. Very nice. Then we managed to meet once before we started performing together, and I'm going to ask Anand to take over and speak about that. Yeah, sure. Amazing story. Am I audible? And it's like you are like-minded people and you just want to do the music together. Yeah. Forever. So am I audible? And I just want to tell viewers that Anand is a great guitar player too, and you will see him. And Atul is a 2-time finalist at the Panorama Indian Idol contest. Whoa. Accomplishments. So can you see Anand? Because again, I am having some issues on internet. You guys Yes, Anand is on and we can hear him. Okay, cool. So awesome. Anand aap bataye, and then you guys are singing something together, or fir uske baad Anand will sing and then Atul will sing. So I think I'll move out of your way. So over to you, Anand and Atul, for the time being. Sounds good. Hi guys. I hope everyone can see me and hear me. I hope I'm audible. So many people are there today. I mean, it's phenomenal. So I'll take it from where Atul left off. So I saw this Facebook post that this guy put on one of the Marathi platforms, and I was zapped because having a rock band ad in a Marathi group, it's unheard of. It's like highly unlikely that you can find something related to a metal band in a Marathi forum. So I sent him a friendship request. Now that proves that guys don't just send friendship requests to girls. They send it to guys too, like-minded guys. Anyway, so then, our friendship grew. Like we started sharing a lot of music, a lot of metal and stuff like that. Metal, YouTube link songs and stuff like that. And then we got an opportunity at one of the local restaurants. They were running a karaoke night. And then Atul said, since you play guitar and since I, enjoy singing English, why don't we do some unplugged? And I said, yeah, sure. Why don't we do that? So we came up with this song by this rock band called Extreme. And the song's called More Than Words. And in that Hindi karaoke session, ours was the only item that was unplugged and, completely unique. No disrespect to other singers in that forum. They were great too, but I'm just explaining how friendship evolves and what comes out of that. So that's what it is. And Atul, so should we start our song? Absolutely. Let's go.
So Atul and I are going to present a song. Unfortunately, I'm in Mississauga near Toronto, and Atul is in Hamilton near Niagara Falls. So we're going to try this, how it works. We're not going to be using any instrument. We're not going to be using any karaoke track. It's just a cappella. So here we go. We're doing a song from a movie, Dil Chahta Hai. Which better movie to, kick off the friendship song with. So here we go. कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना है, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना हो, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना, हो हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। अरे जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, हो अब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना, हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। हे बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, तुम अपनी धुन में गाओ दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, अरे हम नए नए अंदाज क्यों हो पुराना। Thank you. Happy Friendship Day, all. That was awesome. That was awesome. Beautiful. Phenomenal. Thank you. Anand, your turn. Yes. Sure. So I'm going to be doing this song, an unplugged song from the movie Yarana. And I hope you guys enjoy this song as much as I enjoyed singing and playing. So here we go. You will know the song that I'm talking about. It's a pretty famous song. तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया खुद पे, मुझे खाक से उठा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया खुद पे, मुझे खाक से उठा के, तेरी जिंदगी नया तेरे बिन मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
न जाए, तेरे बिना जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी मोह तू न जाए, तेरे बिना जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। Thank you guys. I hope you enjoyed this unplugged version of Tere Jaisa Yaar Kahan. And now over to I believe Atul. But before that, I Wow. believe Kamal ji or Meeta ji, if they would Beautiful like song to and beautiful say singing. something. Absolutely, absolutely beautiful. And this song actually, it's in our hearts. So, and you sang it so well. It was Thank you. coming straight. It was coming straight from your heart. The strings and the throat both were in unison and with the heart. So Thank you beautiful. so much. And it's Thank you always very much. difficult जब लोग इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं. It's like you are doing two things together and doing both the things Absolutely. perfectly well. Hats Yeah. off to you, Anand. Good job. Great job. Thank you very much. All Over right. to I believe Atul now. Atul, let's hear from you now. Okay, great. Anand, what a fantastic tribute to friendship and our friendship. So as Kavalji said, we are members of a band called A2T, and that stands for Anand, Atul, Titus. And Titus is our third friend who's not here right now. We are trying to get him to sing. He doesn't sing that often, but he is also very thick with the both of us. So we came up with A2T. I'm going to sing a song by Arijit Singh. So it's a newer song and a wonderful song about friendship. This is my first time singing this song on a public forum. So if I make any mistakes, please forgive. But it's a beautiful song. Tera Yaar Hoon Main. क्या ये सच्ची, क्या मैं झूठा, बात सिर्फ इतनी सी टिकी, या तो ये या मैं। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं, आजा करे फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं,
मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ. खुशियां च नचदा मैं फिरा अंजुआ दा बचदा मैं फिरा ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे क्यों परेशान है मेरे जाने से टूटा है तो जुड़ा है क्यों मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं ओ तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ Thank you very much. That was so awesome, Atul. That was really good. Really, maza hi aa gaya. What a feel. Thank you, And Ji. wow, beautiful. Very, very beautiful. Pakka, like it was dedicated to friendship. So just superbly amazing. Thank you, Atul. Thank you so much. And thank you, Anand. And may your friendship last forever. और आप हमें interesting अच्छा music देते रहे. Thank you. All right. So, guys, एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स जो कि कॉमेडी एंड वेरी वंडरफुल मूवी आई लव्ड इट और इसका फनी सा डायलॉग था कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी दुख होता है. Of course, that's not true. That's funny. But in reality, we know when our friends are successful, when they achieve something, when they go places, we are like so always so proud of them and so happy for them. And same is true for my friend, my sister, Meeta Khanna. I'm so proud of her that she is doing so well. I mean, it's difficult to keep track of कि क्या क्या करती रहती है Meeta. So she is a singer. She is a TV show host. She is a poet. She's a writer, or she's a pranic energy healer or yoga instructor. And so great going, and wish you all the best, Meeta. I'm so very proud of you, my dear. Thank you so much. I always, whenever I talk about Kamalji, I always talk about her as my friend, philosopher, and guide prior to being a sibling. So the friend words comes in the foremost, at the first place. And a true friend is one who always guides you, tells you the right path, can point out your shortcomings, or if you're doing something wrong. So that is a true friend. We all know that, but still we sometimes we expect only praises, so which is not the sign of a true friend. Thank you for always being my true friend. Proud of you. Yeah. Thank you. And over to you. Let's hear from you. What you have to share today. So yeah, thank you so much. So
आज मैं आपके साथ कुछ गीत नहीं गा के सुना रही हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी की सोच के बारे में और दोस्ती के बारे में कुछ अलग पहलू उजागर करूंगी। वो शायद इतने अभी तो नहीं हुए हैं। छोटी सी एक नज़म मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले दोस्ती पर कि क्या रिश्ता है ये, क्या रिश्ता है ये, या कोई रिश्ता है ही नहीं। क्योंकि जहां रिश्ते नाते साथ छोड़ देते हैं, दोस्त याद आते हैं, वही तो पास जान पड़ते हैं। बेवजह तो नहीं होती उनकी मौजूदगी हमारी जिंदगी में। कुछ तो रूह की बात, कुछ अलग से जज्बात, दिल खोल डालते हैं हम उनके सामने। गिरने लगते हैं तो वो आ जाते हैं हमें थामने। शायद आजकल दोस्ती के मायने बदल गए हैं। कहाँ मिलते हैं अच्छे दोस्त जो दोस्ती पर दिल को कुर्बान कर दे, जो आपको ऊपर उठाए गिराए नहीं, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसकाए नहीं, और दोस्ती को निभाए निभाए। कुछ अलग पहलू हैं दोस्ती के जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। एक दोस्ती जो है हमारी उस ऊपर वाले के साथ, ईश्वर, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह, हमारे मुर्शद के साथ, कि मक्के गया गल मुकदी नहीं, जिचर दिलों न आप मुकाइए। गंगा गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 गोते लाइए। जो मर्जी हम काम कर लें, जैसे मर्जी हम अपने जीवन को चला लें, पर जब तक अपने आप को हम अपने इस अहंकार को नहीं मिटाते हैं, तो दोस्ती जैसा रिश्ता खास तौर से नहीं निभा पाते हैं। बुल्ला शाह गल मुकदी ताही, जद मैनू खड़े लुटाइए। Rumi says, friend, our closeness is this. Anywhere you put your foot, feel me in the firmness under you. हमारे पैरों की जमीन बनकर आता है मेरा दोस्त, मेरे पैरों की। गुरबाणी has in the Sahib Shri Guru Granth Sahib Ji, there are so many beautiful quotes about the true friend, real friend, the actual friend, a friend that is there to guide you. के मनमुख सेती दोस्ती थोड़निया दिन चार, इस परीति टुट दी विलम ना होवे, इत दोस्ती चलन विकार। जिना अंदर सच्चे का भाव नाही, नाम ना करे प्यार। नानक 300 क्या कीचे दोस्ती, जे आप भुलाए करतार। So through the relationship we change, right? Such friends cannot stay there forever. Such kind of friendship cannot stay forever, where there is a lack of support. Again, Gurbani says, "Naal kirada dosti kuda kudi pai." That means friendship with false and greedy people is absolutely false. और नाल इयाना दोस्ती कदे ना आवे रस। Friendship with a fool or ignorant or a blockhead never works out right. We have so many examples from all our scriptures, and if we talk of ishq hakiki, we know the divine love, where we are in love with the God, with the Almighty. Divine love is the nature of the soul. The soul has it within itself since eternity, but it depends if one nourishes it or not. So ishq hakiki is that which has triggered the process of creation in this whole universe. So, and again, the Bible says friendship with God. This friendship means being so intimately in touch with God that you never even need to ask Him to show you His will. It is evidence of a level of intimacy which confirms that you are nearing the final stage of your discipline in the life of faith.
सो दोस्ती विश्वास का नाम है, दोस्ती एक अटूट बंधन का नाम है जो आसानी से नहीं टूटता, पर दोस्तों में विश्वास होना और मोहब्बत सच्ची होना बड़ा जरूरी है। मुझे एक पंजाबी का गीत याद आ गया, तो मैं उसके साथ अपनी बात को खत्म करूंगी, क्योंकि कुछ गाए बिना तो मैं रह नहीं ना सकती। तो कुछ टाइम पहले ये गीत आया था, शहरी मान जी का गाया हुआ है। बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले, बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले, सी मौजा कर दे कॉलेजी पढ़ दे, सी नाल बिताई ओ उमर जवानी, ना होन पढ़ाइयां ना होन पढ़ाइयां सारा दिन करनी, ओ दुनिया वखरी सी नी लड़े लड़ाइयां, ना होन पढ़ाइयां सारा दिन करनी, किसे दा डर नी गुलाबा वर्गी ओ तो जिंदगानी, ओ तो जिंदगानी, बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले। बहुत खूबसूरत गीत है कि बचपन की यादें हैं, बचपन के दोस्त हैं। जब ज्यादा क्लासेस कम अटेंड करते थे स्कूल में और बंक ज्यादा करते थे, कॉलेज की मस्ती होती थी, खूब दोस्तों के घरों में बैठ के महफिलें जमती थी, और सिवाय मौज के और मस्ती के और कुछ ख्याल नहीं होता था। और जो बचपन की दोस्ती है ना यारों, वो सबसे गहरी होती है, क्योंकि जो बचपन में दोस्त बनता है तब तो कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं किसी का, कोई मतलब की यारी नहीं होती। जो यारी हम बनाते हैं ना बाद में, बड़े होने के बाद और कुछ ज्यादा बड़े होने के बाद दिखता है। हमारे ऑफिस में कोलीग्स हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर वो जैसे जैसे हमारी ट्रांसफर होते हैं या हम एक शहर जाते हैं तो हम छोड़ ही देते हैं उनको। बचपन के और जो कॉलेज के दोस्त भी हैं, क्योंकि कॉलेज में भी एक ऐसा दौर होता है कि हम सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक दूसरे की स्ट्रगल के साथ हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तो बहुत प्यारा एक रिश्ता बन जाता है स्कूल और कॉलेज के दोस्तों के साथ। बड़े होने वाली दोस्ती कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसी रूहें मिल जाती हैं जिनको कि लगता है कि बिछड़े हुए रूह मिली है, बिछड़े हुए दोस्त मिले हैं कुछ जन्मों के, और उनकी दोस्ती जो है हमेशा के लिए बरकरार रहती है। हम बहुत से आजकल देखते भी हैं, ऐसे मैसेजेस भी देखते हैं व्हाट्सएप पे भी, हम जानते भी हैं इस चीज को, जो जब हम बड़े उम्र हो जाते हैं, एक उम्र के एक खास पड़ाव पर आ जाते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारी दोस्ती और हमारे दोस्त हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। जब हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं और हम जब वक्त बिताने की सोचते हैं, कुछ अच्छा वक्त गुजारने की सोचते हैं, हंसने हंसाने की, कुछ गीत गुनगुनाने की बात करते हैं, तो हमें अपने दोस्तों की जरूरत महसूस होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि हमेशा दोस्त बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ बनाए रखिए और दोस्तों को साथ बनाए रखिए। इसी बात के साथ, दोस्ती के इस पैगाम के साथ, चलिए हम आज की बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूटिफुल वर्ड्स, बहुत डीप बातें मीता आपने करी. इट वाज सो गुड. Gurbani Di and Bible and your spiritual thoughts, so good. And Thank you so much. you know, and we all know that we have differences, we physical differences, opinions, political views, music taste, everything, but we have more in common than we realize. Yes, we have more in common than we realize. So let's promote togetherness every day. Let's promote friendship every day. Let's say stay connected. So I hope, guys, I hope folks you all liked the program. We loved putting it together. I thank all our team, all the participants, all the viewers who have been on our show live, and we request you to please subscribe to DesiGoonj YouTube channel so that you know what program we are bringing next. Talking about next program ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਵਨ, ਠੰਡੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੌਂधी ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਕੌੜੇ ਔਰ ਮਾਲਪੂੜੇ ਔਰ ਖੀਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੀਤ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੀਂਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਝੂਲੇ, ਕੁਝ ਸਾਵਨ, ਕੁਝ ਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਵਲ ਜੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਕਵਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ ਪਿੰਗ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖੋਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ क्या बात है, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। क्या बात ਮਨਾਣਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ सौन महीना भरे मेघला, सौन महीना भरे मेघला, लश्के चोरा चोर वे दिन तिया दे आए, पिंगा लैन हुलारे जोर वे दिन तिया दे आए, पिंगा लैन हुलारे जोर। ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਬੀ ਦ ਈਵਨਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੀਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ desigoonjlive@gmail.com ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we would love to, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੈਗਾ। there's so many ਬੋਲੀਆਂ, so many ਬੋਲੀਜ਼। ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 2-2 3-3 ਬੋਲੀਆਂ। we'll have a lot of participation, that'll be fun। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਏਗਾ, that'll be on 22nd August, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। so we will be celebrating his life on 22nd August। so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਨੀ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਏਂਗੀ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। as you can see we cannot stop, but we have to stop। so we'll see you on 15th August evening time. Exact time will be shared later for Tia, and on 22nd August for Asa Singh Mastana show। so till then, stay safe, stay happy, stay healthy, and stay with your friends. Connect with your friends. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye.